The priority is, of course, finding the loved ones. There are a lot of tourists also that are unaccounted for. And as Nepal continues to battle the aftermath of this devastating flash flood, several questions for India as well. The scale of destruction is becoming clearer on the ground with each passing hour. The flood destroyed homes, roads and bridges. Rescue teams continue searching for those missing. News9 is on the ground in Nepal, ladies and gentlemen, bringing you the latest report from the affected areas and a first-hand account of the devastation. रसुआ के लिए जब आप निकलते हैं तो ये वो आखिरी पॉइंट है जिसके बाद आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ एक साथ ये वो बस्ती है जहाँ तकरीबन 400 घर है और उन घरों का क्या हाल है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहा है, किसी तरीके से इस रास्ते को सुचारू रूप दिया जा रहा है और आसपास में जो लोग ऊपर के हिस्से में रह रहे हैं उन्हें ये कह दिया गया है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, उन्हें यहाँ से निकाल लिया गया है। एक एक करके जब आप तस्वीर देखेंगे, ये कृषि विकास बैंक लिमिटेड है, ये बैंक है, इसके ठीक बगल में भी एक दफ्तर है, वो भी बैंक है। ये सब आज की तारीख में जब आप इसको देखते हैं तो पता चलता है कि इसकी स्थिति कैसी है। ये जो पॉइंट है इससे आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल कहा गया है लोगों को कि आप इस इलाके को खाली कर दीजिए, लोगों को यहां से हटने के लिए कह दिया गया है। और ये ठीक सामने जो आप घर देख रहे हैं ये लोगों के अपने अपने घर हैं, यहाँ होम स्टे है, होटल है, रेस्टोरेंट था, जो सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है। कल दोपहर तक यहाँ की तस्वीर बदल गई, कल सुबह जो कुछ भी तस्वीर थी दोपहर आते आते वो तस्वीर बदल गई और अभी हालात ये है कि यहाँ कितने लोग रह रहे थे, कितने लोग बचे हैं, कितने लोग यहाँ से निकलकर सुरक्षित किसी ठिकाने पर पहुंच गए, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ऊपर वाले हिस्से में नदी के एक दूसरे हिस्से में देखेंगे, ऊपर वाले हिस्से में जो कुछ घर नजर आ रहे हैं उन घरों में जितने लोग रह रहे थे उन्हें भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो इस जगह को खाली कर दें, उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। और इस बैंक के ठीक पीछे वाला जो हिस्सा है, जो नदी आपको नजर आ रही होगी, उसी नदी में वो तबाही आई और उस तबाही के बाद कैसा यहाँ मंजर बना, कैसी तबाही हुई, किस तरीके से यहाँ बर्बादी हुई है, वो सब कुछ आप कैमरे पर देख सकते हैं। 26 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तबाही की एक के बाद एक निशानियां और एक के बाद एक तस्वीरें अब नजर आने लगी है। दूर तक आप देखेंगे तो इस बीच वाले हिस्से में एक ब्रिज था, उस ब्रिज का कुछ भी अता पता नहीं है, वो ब्रिज कहां चला गया। उसके बाद संपर्क बिल्कुल टूट गया है। काठमांडू से रसुआ जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो रास्ता बाधित हो चुका है और इस बीच में आप ये जितने घर देख रहे हैं इन घरों को अब तो खाली कर ही लिया गया है। साथ ही साथ जो लोग पहले थे यहाँ, जो उस वक्त में यहाँ मौजूद थे, सुबह सुबह का वक्त था, कल 9 साढ़े 9 बजे का वक्त था, कहीं कोई रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, कहीं कोई अपने घर में था, कहीं कोई होटल में था। और अब जब उस पर लोग नजर दे रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तब पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी तबाही है और इसका अंदाजा लगाने में अभी और थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे जैसे आप नजर घुमाएंगे, मनीष एक एक करके दिखाते रहिए कि ये जितने घर आपको दिख रहे हैं इन घरों में उस वक्त में लोग मौजूद थे, कुछ पर्यटक मौजूद थे जो या तो भारत से आए थे या दुनिया के किसी और देश से आए थे। नेपाल के जो पर्यटक हैं जो काठमांडू से आए थे, पोखरा से आए थे, नेपाल के अलग अलग हिस्से से आए थे, वो लोग भी यहाँ रुके हुए थे, स्थानीय लोग थे। और एक बार में जब तक कोई कुछ सोचता तब तक वो तबाही आई और सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है और इस नदी के ठीक बगल में जितने घर हैं उसके बारे में लोगों को साफ साफ कह दिया गया है कि आप उसे खाली कर दें। Well, now the devastating floods in Nepal have raised a critical question. How did a sudden surge high in the Himalayas turn into a deadly wall of water downstream? AI-generated visuals on your screen recreate the possible chain of events believed to have triggered the disaster. A technical report from Nepal's Flood Forecasting Division gives us a clearer picture of how the flood unfolded over roughly 10 hours. It began at 8:37 in the morning when a magnitude 4.4 earthquake was recorded. Just 13 minutes later, the river monitoring station at Siabrubesi in Rasuwa stopped transmitting data. At around 9:05 a.m., authorities received information that a major flood had entered the Bhote Koshi River from the Tibetan side. And the surge then travelled through the Bhote Koshi and into the Trishuli River.
authorities began sending warnings to people living along the river corridors. Between 9:15 and 9:16 a.m., more than 6 lakh SMS alerts were sent to residents in Rasuwa, Nuwakot, Dhading and Chitwan. By 11:26 a.m., water levels at the Phurke monitoring station had crossed the danger mark. Just 17 minutes later, at 11:43 a.m., the flood swept away the Phurke bridge and the other structures, and by 1 p.m., the flood had passed Muglin. At 2:15 p.m. in the afternoon, the Kalikhola monitoring station recorded water levels above the danger mark, eventually reaching a peak of 12.3 meters. And just an hour later, by 3:20 p.m., the flood had reached the Narayani Devghat area. At Devghat, the river peaked at 6.57 meters at around 4 p.m. and by 6:30 p.m. in the evening, the water level had fallen back to around 4 meters. The technical assessment estimates the flood brought an additional 20 million cubic meters of water. So, from the earthquake in the morning to the flood beginning to recede by evening, the surge travelled from the Bhote Koshi through the Trishuli to downstream areas in roughly 10 hours. But the bigger question, what triggered that initial surge? Satellite imagery and preliminary assessments point to a possible collapse of glacier and rock high in the Himalayas. The mass may have crashed into the Lhende Khola, triggering an ice and rock avalanche. The debris could then have blocked the river, creating a temporary natural dam. As water built up behind it, the barrier may have given way, unleashing a powerful surge of water, mud, ice, and boulders downstream. The exact cause is still being investigated, mind you, including the possibility and the role of a seismic activity. How the Nepal flash floods started. 26th of August, 2026. This is a preliminary reconstruction from official statements and mountain scientists. Details may still change. The disaster hit Rasuwa district on Nepal's northern border with Tibet. The Bhote Koshi River flows south from the high Himalayas into Nepal and joins the Trishuli. A tributary called the Lhende Khola was at the center of the event. There was little or no heavy rain in Nepal that morning, so people were not expecting a flood. Step 1. At 8:37 a.m. local time, a magnitude 4.4 earthquake was reported near the Nepal-Tibet border. It was not a giant quake, but on steep, ice-covered slopes, even a moderate shake can loosen glaciers and rock. Step 2. Scientists say an ice and rock avalanche then broke from a glacier, most likely on the Nepal side. Ice, snow, and rock plunged into the narrow Lhende Khola Valley. Step 3. That debris plugged the river. Water piled up behind a temporary dam of ice and rock, forming an unstable lake. Step 4. The dam failed. A sudden outburst of water, mud, ice, and sediment roared downstream. Researchers describe it as an avalanche dam outburst, similar to a glacial lake flood. Step 5. Around 9 a.m., the surge smashed through the Bhote Koshi corridor, the Rasuwagadhi border, Timure, Siabrubesi, then on into the Trishuli toward Nuwakot. Bridges, roads, and hydropower plants were torn out. A mudslide also hit Girong Port on the Chinese side. Step 6. Why here? Steep valleys funnel water. Warming Himalayan glaciers are less stable. This same river flooded only 14 months earlier, and because there was little local rain, there was almost no warning. Investigations are still underway. Debris remaining upstream means a second surge is possible. Rescue work continues on both sides of the border. Well, floods battered Nepal after a sudden surge in the Bhote Koshi River, sweeping through the Rasuwa district near the China border. The cause of the devastating flash flood is, of course, being investigated, and initial assessments suggest that an ice avalanche may have blocked the Lhende River, causing water to build up behind it, making up for a temporary dam before suddenly giving way, bursting downstream. Assessment also says an earthquake also occurred on the Tibetan side around the same time. The US Geological Survey recorded a 4.4 magnitude earthquake in Tibetan territory at 8:37 that same morning, around 47 kilometers north of the Gosain Kunda.
Ice, rock, dam, and then all of it came down like a flash flood, leaving nothing but devastation in its wake.